So now let's begin with this topic, that is a time, speed, and distance. And in the past, we have done some of the sessions based on this topic, right? This is a little important topic with respect to any of examination, right? You're targeting any examination, aptitude based particularly, right? So this is a little important topic because very practical topic, day-to-day life dependent topic, and we have a logical concepts, right? This is not a formula base. I suppose that in the previous sessions, whatever we have discussed for this topic, I have not used any type of formula, right? We are just doing a logical and the proportionality and various other concepts to get the answer, to get the solution, right? So this is the favorite topic for the examination because with this topic you are doing logical thinking, right? You're putting up your brain to get your answer. Okay, so moving further for this topic, now these are the some topics, subtopics related to this. So we have done unit of measures, proportionality, average speed, relative speed, right? Now we are just moving for this part, that is races, linear and circular races. Okay, so I suppose that you must be having information that we are very close to the Paris Olympic, right? And Olympic Games, Asian Games, all these games are typically and having a majority of games related to athletics, running, right? And in those, we are having 100 meter, 400 meter relay race and different marathon and different type of races, right? Running in a straight line, running in a circular track. Even in the schools, colleges, we have participated in various such physical activities, right? So just starting with the circular races, right? Okay. So you have all the rights to unmute yourself, to raise your hand, to type in the chat box, right? So I suggest you people to just interact, okay? So that we have a good discussion, we have a good learning, and others can also listen to you and they can add some points. Done. So starting with the first thing, can you define what is the meaning of race? How will I define the term race? What is this race? So running from one place to another, like one point to another. Okay, Paridhi. Some part is correct, but not the complete one. Okay. Yeah, some other person. So, How can I define? Yes. yeah, race would be competing to reach from point A to point B in the minimum time, like whoever reaches first. Okay. Okay. There is a one more addition in the points which Paridhi just elaborated. Okay. And some other thing. Yes. Anyone else? Ellen is saying participants moving from starting point to finishing line to achieve a ranking. Okay, 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 okay. So now we are having a three definitions, right? And before going into the definition of race, I just want to elaborate, say one thing here. See, in a today's competitive world, right, you're doing competition in schools, colleges, office, even you're entering in a metro, buses, everywhere is a competition, right? So every time in the mind, we are thinking, I should reach first, right? And thinking this, that okay, I should reach first, many times we are making mistakes, right? So what I understand, winning is not important. Participation is very important, right?
if you're participating, if you're having an intent to win, right? You're actually winning or losing, doesn't matter, right? These are the byproduct of the process. But if you're participating in the process, that is more important, right? So race, how do I define this term race? Race is a competition of speed among the participants, right? How can I define the term race? Race is a competition of speed among the participants. है ना? Now, you people are saying, okay, who is reaching first, who is reaching in a shorter span of time, right? So, as I was discussing, in a Olympic, Paralympic, Asian Games, and Commonwealth Games, etc. So, athletics is a major part, right? So, running is a one kind of like thing. And even in a school days, you are having, say, different games, lemon race and different kind of race, like rope pulling, etc. So you're moving in an opposite direction, running in opposite direction, right? So race is what? Competition of speed among the participants. Now, whoever win, whoever lose, doesn't matter. This is the after effect of the competition, right? But it is a competition, and competition should be healthy, right? I should not try to put down any other person. Okay, so race. Now, in this, we have some typical standard statements, and which I am just elaborating here. So, if I say in a kilometer race, right? There is a race of 1 kilometer. In a kilometer of race, A gives B a start of 100 meters. Now, what does this mean? In a kilometer race, A gives B a start of 100 meters. Yes. Okay, Alan. Okay. Yes, somebody can explain. In a kilometer race, A gives B a start of 100 meters. So, Hmm? so basically, it means that A is giving B 100 meters ahead. It's like Mhm, A mhm. is 100 meters behind of B. Right. Now, suppose this is my track, and track is having a 1,000 meter of total length, 1 kilometer, right? And this is A gives B a start of 100 meters. So assuming that A is here, so B will be here, and this is 100 meter, right? So A suppose is standing at starting point, and B is standing 100 meter ahead of A. So this means if I want everyone is reaching at this finishing point, so A will be running 1,000 meter and B will be running 900, right? And I suppose that you must be watching and reading the news and information, etc. Before all these major events, there are some qualifying events, Olympic, etc. So before actually they start, there are some qualifying events, right? And you can notice that in the this previous Cricket World Cup, West Indies was not there, right? Because they were not able to qualify for the actual World Cup. Yeah. So, in every game, there are some qualifying stages, and after this, the persons or the teams are moving further. So, in the qualifying, depending on their points, depending on their, say, whatever they're earning, right? So, particularly in a running competitions, I suppose you must have seen that runners are running at some distance, right?
Why? Because they are earning us some advantage in the qualifying stage, right? Okay, so this is A gives me a start of 100 meter. Now, A beats B by 100 meters. In a kilometer race, A beats B by 100 meters. So how can I interpret this? A finishes first by 100 meters. Yeah. So if I say this is my track, and if A is here at a finishing point, right, B is here, and B is 100 meter behind A. So if B is running 100 meter more, right, if I allow B to run 100 meter more, so B can also reach finishing point, right? Okay. Next, A gives B start of 10 seconds. Yes. So earlier two statements related to distance. Right. Now this is time. A gives B a start of 10 seconds. How can I interpret? Yes. B starts before A by 10 seconds. A starts after B only Yes. after 10 A seconds starts of after. the. Yes, yes, yes. A starts after B. But basically, I cannot say that A starts after B, right? This is typically first B start, run for the 10 seconds, and then A will start, right? And if I say A beats B by 10 seconds, yes. So when the A is at finishing point, and if B is allowed to run further, B will also reach finishing point after 10 seconds, right? Okay. And the last point, A beats B by 150 meter or 10 seconds. Yes. How can I interpret this? In a kilometer race, A beats B by 150 meter or 10 seconds. In a 1 kilometer race, A reaches first, then if the B is allowed to run, you will reach the finishing line by, if you run 150 meters more, for that 150 meter, he'll take 10 seconds. Yes, yes. So basically, if I put this in a diagram, so suppose this is my track, A is here and B is here. In terms of distance, this is 150 meter, right? And in terms of time, this is 10 seconds because this is saying or. So if B is running in terms of distance, B will take 150 meter more to reach a finishing line. And in terms of time, if B is running 10 seconds extra, so B will be reaching at finishing line, right? So with this distance, with this statement, I can interpret B will be covering, right? B will be covering 150 meter in 10 seconds. So from here, I can interpret the speed of B, which is nothing but 150 divided by 10, which is nothing but 15 meter per second, right? So with this information, I can identify the speed of B, right?
Done? Can we move further? Sir, can't we find the speed of A with this information? Yes, yes, yes. We can find. We can find. We can find. Right? We'll be doing the questions. So now this will be more clear to you. But direct information is speed of B. Right? Okay. Yes. In a race of 100 meter, right? A beats B by 20 meter, right? And beats C by 30 meter, right? In a race of 100 meter, A beats B by 20 meter and beats C by 30 meter. Okay. Now, in a race of 100 meter by how many meters will B beat C? Yes. Just try and give me some answer. Priya, no. Rishabh, no. Not this, not this. Yeah, how is this your answer? So basically, it's like A beats B by 20 meters and beats C by 30 meters. So that means from the finishing line, C is like 30 meters behind and B is 20 meters behind. So if given the chance, so B will cross 20 meters, but till then C will cross only 20 meters. So it will be like behind 10 meters behind the final point. So But see, this comparison, right, the comparison which you are doing here and given in the question, this comparison of B and C is given with respect to A, right? But what you are doing, you're comparing B and C between themselves, right? B and C are compared with respect to A, right? But there is no comparison given between B and C. We have to identify this comparison, right? okay, sir. Okay, so Zaid, Akriti, no, not this. The answer is not this. Okay, so see this. I suppose you people must be getting this point that the comparison here is given with respect to A, right? B by 20 meter with respect to A. C by 30 meter with respect to A. There is no comparison given between B and C. This comparison we have to identify. Then only we can say how many meters B will beat C. Right? So what to do? A, B, and C. Huh? Three persons are running. If A is running 100 meter, B is running 80 because A beats B by 20 meter. And if A is running 100 meter, C is running how much? 70 because A is beating C by 30 meter. Done. I suppose this is very simple, right? Now, I have to compare this B and C. Okay, so what to do?
Now see this. If B is running 80, yes, B is running 80, B will beat C by 10 meter. Huh? So this is not with respect to 100 meter. This is with respect to when B is running 80 meter. Then C will be running 70 meter. So in a race of 80, I can say in a race of 80 meters, B will beat C by 10 meters, right? So if B is running 80, B is beating C by 10 meter. If B is running 1 meter, beating C how much? 10 divided by 80 meter, right? And if B is running 100, so B is running what? 10 into 100 divided by 80, right? Cancelling this 0, this is 100 by 8, which is nothing but what? 12.5 meters, right? So this is not 10 meter, this is 12.5 meters. And this is, see, just a simple application of the unitary concept, right? And many times I have told you to just try to memorize the tables, reciprocal percentage, etc. So see, this last calculation is nothing but 1 by 8 into 100, which is a reciprocal percentage. So if I memorize them, this is very fast, very easy to identify. 100 by 8 or 1 by 8 into 100 is nothing but 12.5 meters, right? Can we move further? Yes, sir. Okay. In a race of 100 meters, A leads B by 20 meters. है ना? In other race of 100 meters, B leads C by 30 meters. Okay? So see the difference. In the previous question, ABC, all three persons are running one race. है ना? Now here, A and B are running one race, B and C are running other race. है ना? There are two different races. So in a first race of 100 meter, A is beating B by 20 meter. In the second race of 100 meter, B is beating C by 30 meter, right? So in a race of 100 meter by how many meters will A beat C? Yes. Yes, others waiting for some answer. Ziad, no, not this. Ziad, how is this your answer? That was wrong, sir. Okay. Yes, some other person. Can we discuss? Can we solve? Priya, no. Rushabh, yes, this is correct. And Venkatesh, just check. Venkatesh, see what we want to calculate by how many meter A is beating C, right? Just check. Priya, how is this your answer?
14. Maybe I think you're typing wrong something. Are you exactly want to do you exactly want to type this 14 or some other number? No, sir, actually it was 14 only, like by the comparison of BX. No. Okay. So see, one race is this, right? And other race is this, all 100 meter. So in a first, A is beating B by 20 meter, and in the second, B is beating C by 30 meter. So I take A, B, right? This is one race, and B and C. Done. So if A is running 100, B is running 80, right? And this if B is running 100, C is running 70. Done. Easy. So if I want to calculate a ratio, A by B is nothing but what this is 100 divided by 80. Right? And here B by C is nothing but 100 divided by 70. So you have two equations. Right? What to do now? Just multiply them. Right? Just multiply them. So A by B multiply, this is B by C is equal to 100 divided by 80 into this is what 100 divided by 70. है B and B is cancelled. So your result will give you what? A by C. Right? And 0, 0, this 0 and this 0 is cancelled. So this is what 100 divided by 56. Done. So what I want to calculate, A is beating C, है ना? And if A is running 100, C is running 56, right? Running. So by how many meters A is beating C? This is 44, right? So yes, Venkatesh. So C is actually running 56, right? And C is getting beaten by 44 meters. Done? Okay. Yes, can you move further? Yes, sir. Okay. So next one. In a race of 100 meter, A beats B by 20 meter or 5 seconds. है ना? Find speed of A and speed of B. Right, yes, as you were asking कि हम A का speed भी निकाल सकते हैं क्या? तो we will be solving with this, right? Speed of V will 14.4 kilometer per hour. Speed of B? Yeah. नहीं. B का तो बिल्कुल सामने क्लियर लिखा हुआ है 14.4 कैसे आ रहा है आपको? A के लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा. Ashna, yes, correct. And Akriti, yes, this is also correct. Yes, B का तो बिल्कुल सामने क्लियरली आ ही रहा है, दिखाई दे रहा है. Sir, it will be 20 meter by 5 second, right? हाँ. Then if we will calculate it by 18 by 5 for 18 by 5? 18 by 5 क्यों करेंगे? 4 kilometer per hour. हाँ, 4 तो 18 by 5 क्या है? To change the meter per second to kilometer per hour.
अच्छा नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो कन्वर्जन तो फिर बात की बात है। I did this. Then I got ओके the 1444. ओके, so if this is say for A is running how much? 100, and this is B, and B is running how much in terms of distance? This is 20 meter less, and in terms of time, this is 5 seconds. So clearly, I can find the speed of B, which is nothing but 20 divided by 5, which is what? 4 meter per second. ठीक है, अब ए का बताओ, ए का कितना है स्पीड ऑफ ए, कैसे करेंगे? Sir, for the B, it will be 4 meter, and for the हम्म, A, it will be 5 meter. कैसे? Means basically we can say A cover the whole distance. It हम्म he cover will it will be 80 by 4. So he will cover the 80 meter in 20 seconds. And हम्म A will also cover the 100 meter of distance in 20 हम्म seconds. So it's basically हम्म, 5 meter per second. okay okay, and yes, Venkatesh. So Venkatesh, how can I calculate the speed of A? Right. So speed and distance is proportional. So speed Mm-hmm. of we know the speed of B and we know the distance. So Mm-hmm. speed of A by speed of B um, will be equal to distance of A by distance of B, which will when we Mm-hmm. equate will give us speed of A as 5 meters per second. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so we can make this little more simple, right? See, in the actual case, B is getting defeated or beaten by A by 20 meter of 5 seconds, right? Assume that if B is covering the entire distance, 100 meter. So what is the time of B? Time of B is running 100 and with the speed of 4, because now we know the speed of B. So this is how much? 25 seconds, right? And taking up this time to run 100 meter, B is getting beaten by 5 seconds. So this means time of A should be how much? 20 seconds, right? And to run 100 meter, speed of BA to run 100 meter with a time of 20 seconds, A is taking how much? 5 meter per second, right? Got this? Can we move further? Yes, sir. Okay. So now coming for the circular races, right? And this we will be doing with a example rather than driving and working the formula. So this is a circular track and length of this is 1200 meters. Okay, and just okay. And say this is a starting point. A and B are the runners. Done. A is running with a speed of 150 meter per second, and B is running with a speed of 70 meter per second. Done. So this is a complete circular track. The length of the circumference, the perimeter, the length of the track is 1200 meter. There is a starting point predefined. A and B are standing at a starting point. A can run with a speed of 150 meter per second. B can run with a speed of 70 meter per second. Done. First question. Just write the first question, everyone.
Everyone, just write the first question. When will A and B, when will A and B meet, when will A and B meet at starting point, for the first time, running in same direction? I repeat, when will A and B meet at a starting point for the first time running in same direction? Yes, tell me. I once again repeat, when will A and B meet at a starting point for the first time running in same direction? Okay, Yash, okay. यश कैसे आ रहा है ये आंसर? Sir, basically you tell this in your previous session that if they are running in the same direction, the speed will be minus higher minus lower, right? So speed, relative speed will be the 80 meter per second, and the whole speed is 1200 meter. So basically we will divide it, then we will get 15 seconds. So after 15 seconds they will get meet. तो इसमें आपको क्या ये कंफर्म हो रहा है कि जो ए एंड बी हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मीट कर रहे हैं? No, they will meet, but it's not starting. Sorry, sir, I हाँ, तो calculated wrong. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज आस्किंग व्हेन विल ए एंड बी मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम रनिंग इन सेम डायरेक्शन? एनी अदर पर्सन वांट्स टू से समथिंग? क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? So, I wanted to discuss one approach. So, can we like first take out the separate time for A and B, that how much time do they take to cover 1200 meters, and then LCM of both the time. So that will be the first time they will be making that second. Yes, absolutely correct. See, the Piyushi was discussing the approach is absolutely correct. अभी क्या होगा अगर हम ना, देखो मैंने क्या बोला था कि जो हमारे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बेसिकली जो अरिथमेटिक है ना, उसमें ना आप जितना अच्छे तरीके से इमेजिनेशन कर लोगे, जितना अच्छे तरीके से पिक्चराइजेशन कर लोगे, वो इजी होगा करना, है ना? अब क्या हो रहा है कि ए तो रन कर रहा है 150 मीटर से और बी रन कर रहा है 70 मीटर से, है ना? और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि दोनों इस तरफ जाते हैं, राइट? अब क्या होगा, जैसे ही रेस स्टार्ट होता है तो ए का जो स्पीड है ना वो बी के डबल से भी ज्यादा है ना? 150 मीटर और बी तो 70 मीटर पर ही है। तो क्या होगा कि ए बहुत तेजी से रन करके आगे निकल जाएगा, है ना? और ए रन करके पूरा एक राउंड रन करके वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा तो बी कहीं ट्रैक पे ही रन कर रहा होगा, है ना? अब हमें क्या बताना है कि फर्स्ट टाइम वो ट्रैक पे कब मीट करेंगे? तो अब जब फर्स्ट टाइम मीट करेंगे ना, उस टाइम गैप में क्या पॉसिबिलिटी है कि ए और बी इंडिविजुअली कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ राउंड्स रन कर लेंगे, है ना? एंड मे बी ए कैन रन 3 4 5 राउंड, बी कैन रन 1 or 2 राउंड एंड दे आर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? तो हमें क्या करना है, अगर इस तरह से है 2 3 4 जितने भी रनर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनके इंडिविजुअल टाइमिंग्स निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच करने के। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है,
राइट। तो ए का कितना होगा, दिस इज 1200 डिवाइडेड बाय 150, राइट, दिस इज व्हाट 8 सेकेंड्स, है ना। तो ए 8 सेकेंड एंड मल्टीपल ऑफ 8 सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट पे आता रहेगा, 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, 24 सेकेंड, 32 सेकेंड एंड सो ऑन, राइट। इफ आई टेक रेसेस इनफाइनाइट, वो रेस रन करते जा रहे हैं, है ना। तो ए हर 8 सेकेंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आता रहेगा। एंड बी, टाइम ऑफ बी, ये कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाय 70, एंड दिस इज व्हाट 120 बाय 7 सेकेंड, है ना। ना अब इसमें ना हम लोग सबसे बड़ी एक मिस्टेक और करते हैं यहाँ पे, कि ये जैसे फ्रैक्शन आ गया 120/7, तो इसको ना हम डेसिमल्स में कर देते हैं, और फिर डेसिमल में करते हैं तो ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ना, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, आप 2 या 3 प्लेसेस मैक्सिमम डेसिमल पे लेके उसको राउंड ऑफ कर लोगे, है ना। राउंड ऑफ करोगे फिर उसके आगे कैलकुलेशन करोगे, तो वो जो एरर आपने ऐड कर दिया ना राउंडिंग करने में, नंबर्स को राउंड ऑफ करने में जो एरर जनरेट कर दिया है, वो अब क्या अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शनेटली ऐड या डिलीट हो जाता है, राइट। तो हमें इसको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में ही रखते रहना है। अब ए तो आता है हर 8 सेकेंड में, और बी आता है हर 120/7 सेकेंड में। आई वॉन्ट अ कॉमन टाइम, तो कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड व्हाट एलसीएम। और एलसीएम, अब ये तो फ्रैक्शन आ गया, कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, है ना, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे किसका, 8 and 120 का, और एचसीएफ करेंगे किसका, 1 and 7 का। बिकॉज 1 तो सभी नंबर का डिनोमिनेटर है ना, तो मैंने 8 का डिनोमिनेटर 1 ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम 8 and 120 का कितना आ गया 120, एचसीएफ 1 and 7 का कितना आ गया 1, सो माय आंसर इज व्हाट 127, है ना। तो ए एंड बी स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में रन करके फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, आफ्टर 120 सेकेंड्स, ठीक है। गॉट इट वेंकटेश, यश, Yes, sir, got it. है ना। नाउ नेक्स्ट वन, डेटा बेसिक पेरेंट इंफॉर्मेशन यही है, 1200 मीटर का ट्रैक है, ए एंड बी है 150 और 70 मीटर से रन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल व्हेन विल ए एंड बी मीट ऑन द ट्रैक for the first time running in same direction, when will A and B meet on the track for the first time running in same direction? अब ट्रैक पे कहीं मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेम Now it डायरेक्शन will में be रन, 15 seconds, na? यस यस यस, है ना। तो ये ना हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब तो देखो ट्रैक पे मिल रहे हैं, है ना। तो ट्रैक पे मीट करने के लिए क्या होगा, आई जस्ट शो यू डायग्रामेटिकली, कि रेस स्टार्ट हुआ, है ना। ए रन करके ऐसे रन किया ए ने, राइट, रन करता गया बिकॉज वो तो डबल से भी तेज स्पीड से रन कर रहा है, और रन करके वो यहाँ आ गया, है ना, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया यहाँ पे। इन द मेन टाइम जो बी है वो तो बड़ा ही स्लो रनर है ना, ये इससे हाफ से भी कम है, तो बी रन कर रहा है। अब बी ऐसे रन करते जा रहा है, करते जा रहा है, बी यहाँ कहीं पे पहुंच गया, ठीक है। अब ए ने तो पूरा एक राउंड 1200 का रन कर लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, अब वो दोबारा से दूसरे राउंड पे निकल पड़ा, है ना। तो अगर हम लेते हैं कि ये जो है बी का दूसरा राउंड है ना, यहाँ पे ए आ गया था, और ये ए का दूसरा राउंड है, और इस तरह से वो आके बी को यहाँ पे कहीं कैच कर लेता है, और ए एंड बी दोनों यहाँ पे मीट कर जाते हैं,
राइट। तो अब क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में, जो ए है, ए ने देखो ये वाला जो ग्रीन कलर है ये एक्स्ट्रा रन किया है, 1200 मीटर एक्स्ट्रा रन किया है बी से, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ मीटिंग ए एंड बी ओवर द ट्रैक, फर्स्ट टाइम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में उसने एक ही राउंड रन किया, राइट। तो ये कितना होगा, 1200 डिवाइडेड बाय, ए का स्पीड कितना है 150, बी का स्पीड कितना है 80, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी ये 70 है ना, है ना, ये 70 हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया, दिस इज 1200 डिवाइडेड बाय 80, और ये मेरा आंसर कितना आ गया, 15 सेकेंड। ठीक है। है ना? कई बार ना क्या होता है, जैसे आपने जो बड़े रेसेस देखे होंगे ना, जैसे मैराथन वगैरह होता है, 10,000 मीटर का रेस होता है, या 5,000 मीटर का जो रेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे मैच चल रहा है, रेस चल रही है ना, और सडनली आपने अपना टीवी ऑन किया और आपने देखना शुरू किया, तो उसमें ना मेरे को इम्प्रेशन क्या आता है कि जो पर्सन आगे रन कर रहा है वही विनर है ना। कई बार ऐसा इंप्रेशन आता है ना, बिकॉज 5,000 मीटर या 10,000 मीटर की जो रेस होती है वो स्टेडियम में सर्कल में ही होती है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन पे उनको 10,000 मीटर तक रन कराते हैं, राइट। वो नंबर ऑफ राउंड्स रन करते हैं। तो अब आपने देखा, एकदम से टीवी ऑन किया, देखा अरे कई सारे रनर्स रन कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि जो पर्सन सबसे आगे रन कर रहा है वो विनर है, वो विन कर रहा है रेस को। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होगा, जो विनर होगा ना उसके नंबर ऑफ राउंड्स ज्यादा होंगे, और वो कहीं पीछे से उसको चेज करके आ रहा होगा, राइट। तो ये कई बार हम मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि वो पर्सन विनर कर रहा है, विन कर रहा है, राइट। ओके, डन। ये सेकंड के ट्रैक पे कब मीट करेंगे, आफ्टर 15 सेकेंड। हो गया ना। कैन यू मूव फर्दर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यही हम्म। अगर हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन होता कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो फिर ट्रैक पे कहाँ मिलेंगे, तो हम स्पीड ऐड कर देते उनकी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी जैसे अगर मेरे को अपोजिट निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम ऑफ ए एंड बी, एंड दिस इज 1200 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 70, बिकॉज अपोजिट है ना। ये कितना आ गया, दिस इज 1200 डिवाइडेड बाय 150 एंड 70, 220, है ना। और ये कितना आ गया, जीरो जीरो कैंसिल किया आपने, दिस इज टू, या 60/11। 60/11, राइट। तो ये आपका टाइम हो गया 60, अपोजिट। ओके, और हमने साथ में से डिडक्ट इसलिए किया बिकॉज दोनों का स्पीड डिफरेंट है, तो हमें कॉमन स्पीड निकालना है जिसपे वो मिलेंगे सॉर्ट ऑफ। कहाँ पे क्या डिटेक्ट किया, क्या बोल रहे हो। जब आपने स्पीड माइनस किया था 150 माइनस हाँ 70, हाँ तो हाँ। वी डिडक्टेड बिकॉज ए का स्पीड ज्यादा है और बिकॉज, हमें कॉमन स्पीड हाँ, निकालना है जिसपे वो मिलेंगे। नहीं नहीं, कॉमन नहीं निकालना है, रिलेटिव स्पीड निकालना है। सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट वाला जो केस है, दिस इज दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, है ना। और जो सेकंड केस है, दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम में जब जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फास्टर माइनस स्लोअर, और जब अपोजिट में आएंगे तो हम स्पीड को ऐड करेंगे, ओके, ठीक है। है ना। सिंपल से एग्जाम्पल देखो हम, जैसे क्या होते हैं कि आप ना जैसे जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है ना, जो बिल्कुल अभी रिसेंटली चलने लगा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, तो यस। कई बार जैसे आप गार्डन में उस बच्चे के साथ प्ले कर रहे हो, उस बच्चे को गेम खेल रहे हो, है ना। तो आप क्या कहते हो कि अच्छा रन करो रन करो रन करो, है ना। वो धीरे धीरे करके जो थोड़ा सा आगे जाता है, और फिर आप क्या करते हो, आप ना एकदम से उसको भाग के चेज करते हो, पकड़ लेते हो, है ना। तो क्या हो रहा है कि उसका स्पीड तो कम है और आपका स्पीड ज्यादा है, क्योंकि आप बड़े स्टेप्स ले सकते हो, राइट। तो क्या होगा कि जब आप उसको चेज कर रहे हो, तो आपका स्पीड उस बच्चे से कितना ज्यादा है, कंपैरेटिवली कितना ज्यादा है,
तभी आप उसको चेज कर पाओगे, है ना। तो जब भी हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम स्पीड को ऐड करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज द सेम इंफॉर्मेशन। ट्रैक का लेंथ है 1200 मीटर, है ना। ए का स्पीड 150 है, बी का स्पीड 70 है। अब ना एक और रनर आ जाता है सी, ठीक है। तो अब तीन रनर्स हैं, ए बी एंड सी, और सी का स्पीड है 130 मीटर पर सेकेंड। डन। सो अगेन, just note down the question. When will A, B, and C, when will A, B, and C meet at starting point? When will A, B, and C meet at starting point for the first time running in same direction? अब तीनों रनर रन कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड है, ट्रैक का लेंथ एक ही है सबके लिए 1200 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार सेम डायरेक्शन में रन करके वो कब मिलेंगे, तीनों ए बी एंड सी। यस प्रिया, यस यस। आशना, नो आशना, हाउ इज दिस 120 by 91? I did it the same way. I calculated the time of C, 1200 by 130, and then I took the LCM of the numerator and denominator like we did in the first हाँ, part. तो ये गलत हो रहा है थोड़ा, देखो। टाइम Maybe ऑफ ए 8 सेकेंड आ गया, calculation. टाइम ऑफ बी Yeah. 120 by 7 आ गया, and if I Mhm. want to calculate time of C, so this is 1200 divided by 130, and this is nothing but 120 divided by 30। तो अब क्या करना है मेरे को, एक नंबर यहाँ पे और ऐड हो गया 120, और एक नंबर यहाँ पे 13 ऐड हो गया, है ना। एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर का, तो वो तो 120 आ गया, और एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का, तो 1 7 और 13 का एचसीएफ तो 1 ही आएगा, 91 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे इनको। Yeah, I think I wrote the digit down. It's right. हाँ Yeah, हाँ हाँ, 120. है ना। तो डिनोमिनेटर में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर विल रिमेन द सेम 120 सेकेंड, Right. Thank you. राइट। Okay, so these are the simple ones just to understand the whole logic for this part, है ना। Now, जो typical questions इसमें आते हैं, so next one, ट्रैक का लेंथ 1200 मीटर है ना। ABC थ्री रनर्स है, 150 है, 70 है, और 130 मीटर है, ठीक है। Now, when will A, B, and C, right? When will A, B, and C meet at what? Diagonally opposite point, this one, diagonally opposite point of starting point। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके जस्ट डायगनली अपोजिट पॉइंट पे ए बी एंड सी फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, इफ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। When will A, B, and C meet at diagonally opposite point of the starting point for the first time running in same direction? Okay, yes, okay, Priya, okay. यश, कैसे आ रहा है ये आंसर? So basically, they will meet at the diagonal opposite. So the distance is 600 meters, right? If we will put at here 1200 upon 150, so we will put here 600 upon 150. For TB is equal to 600 upon 70, and for T set will be 600 upon 130. We will calculate, then we will get 4 seconds.
Here we will get 60 upon 7 second. Here we will get 60 upon 13 second, right? So LCM will be 60 seconds. So answer will be 60. Okay. And Priya, how is your answer? So the same approach as Yash, like taking the 600 as like distance and then taking all the speeds by divided 150, 70 and 130 and then the LCM would be 60 seconds. Okay. तो जस्ट टेल मी कि आप ना डिस्टेंस 600 क्यों ले रहे हो? कैसे ये आया कि 600 लेना है? So because it is diagonally, so like dividing half, so that's why we took like 1200 divided by 2. Now अब just see and go back a little. जो अभी जैसे हमने ये पिछले वाले लीनियर वाले क्वेश्चंस किए थे, है ना? तो ये वाला जैसे एग्जांपल देखो, इसमें हमने क्या बोला कि ए इज बीटिंग बी बाय 20 लीटर ऑफ 5 सेकेंड, है ना? तो अब ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए थे, जो 20 मीटर को लिया, तो वो 20 मीटर क्या है? 20 मीटर ए और बी के बीच का गैप है ना? या पिछले वाले क्वेश्चंस में भी जैसे हमने किया कि ए इज बीटिंग बी बाय 20 मीटर, बी इज बीटिंग सी बाय 30 मीटर, तो वो जो 20-30 है वो उनके बीच के गैप है ना? जहाँ पे वो थोड़ा सा डिस्टेंट अपार्ट है। या इस वाले में देखो, जो अभी हमने ये वाला किया था, दिस सेकेंड वन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो वाई इज दिस 1200? ये 1200 कहाँ से आया? ये जो 1200 नंबर है, ये क्या है? क्या रिप्रेजेंट कर? यस प्रिया। So the circumference, like whole distance we are taking. हाँ वो तो है, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको ये ग्रीन येलो कलर में जो डायग्राम ड्रॉ करके दिया था, तो जब भी हम इस तरह से रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस सेशन में जब हमने रिलेटिव स्पीड किया था, तो वी टू के ए और बी हैं, वो इतने डिस्टेंस पर है, ए सुबह 6 बजे चलता है, बी सुबह 7 बजे चलता है, राइट? तो ये जो न्यूमरेटर आता है ना, इसमें जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, जो न्यूमरेटर आता है वो उन रनर्स के बीच का गैप आता है कि उन रनर्स के बीच में कितना है। अब आप डिनोमिनेटर में क्या ले रहे हो? 150 माइनस 70, विच इज अ रिलेटिव स्पीड, है ना? तो अब आपको क्या करना है कि जब आपने रिलेटिव स्पीड 80 लिया, तो आप ये मान के चल रहे हो कि रनर्स के बीच में गैप है और उस गैप को मुझे कवर करना है, उस गैप को फिनिश करना है, खत्म करना है, और वो गैप कितना है? 1200 मीटर, जिसको मैं 80 के रिलेटिव स्पीड से फिनिश कर रहा हूँ, है ना? इसमें क्या होगा? आई जस्ट गिव यू से इजी एग्जांपल। सपोज के ये है आपके पास एक 100 मीटर का ट्रैक है, ठीक है? यहाँ पे ए है, ए सपोज रन कर सकता है 20, और ये बी है, बी कंप्लीट कर चुका है ना? बी यहाँ पर है, और बी इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 10, है ना? और दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि ए बी को कैच कब करेगा, तो क्या करेंगे? क्या करें इसमें? ए बी को कैच कब करेगा? यस। After 10 seconds. कैसे? If the speed the given is the speed of A and B. हाँ, तो अब इसमें जो है टाइम अगर निकाल रहे हो कि टाइम ऑफ ए एंड बी वो बीट कब कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या ले रहे हो? 100. क्यों 100 क्यों ले रहे हो?
distance between them is 100. यस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100, दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप है जो आपको कवर करना है। और ए 20 से रन कर रहा है, बी 10 से रन कर रहा है, सो दिस इज डिवाइडेड बाय वो 20 - 10। तो अब ये आंसर कैसे आ रहा है, आई कैन से के पर सेकेंड है ना। अगर हम ये लेते हैं कि ये इसका मीटर पर सेकेंड है, यूनिट अगर सेकेंड ले लेते हैं हम, है ना, मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आल्सो मीटर पर सेकेंड, राइट। तो 1 सेकेंड में ए बी से 10 मीटर ज्यादा रन करता है ना, ऐसे ही तो इंटरप्रेट करेंगे हम। ए हर 1 सेकेंड में बी से 10 मीटर ज्यादा रन करता है, दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप है। तो फर्स्ट सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट सेकेंड में 20 मीटर कवर किया, एंड सो ऑन। तो 10th सेकेंड में उसने 100 मीटर कवर कर लिया, डिस्टेंस 0 हो गया, है ना, ये हुआ ना। बट अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये 100 मीटर का गैप है, ए यहाँ पे खड़ा हुआ है और बी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, 20 और 10 से ये रन कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये इस फिनिशिंग लाइन पे दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो क्या होगा, ऐसा क्या करें, अब 100 मीटर लेने न्यूमरेटर में। No, sir, because as I get the basically it's about the how to sorry. Basically it's about the cover the distance between the two factors, and यस we have to यस cover the 100 meters, right? यस। अब आप क्या कर रहे हो कि अगर मैंने आपको बोला कि ए बी सी तीनों डायगनली अपोजिट पॉइंट पे कब मिलेंगे, है ना, तो आपने क्या किया, 1200 मीटर है, उसको 600 ले लिया, 600 को जो है कैलकुलेट कर लिया, आंसर निकाल लिया। तो बेसिकली अगर न्यूमरेटर में 600 रखते हो, तो 600 रखने का मतलब क्या है कि आपने ए और बी के बीच में 600 का गैप मान लिया है ना। ऐसा नहीं है कि वो अपोजिट पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, 600 इज द गैप बिटवीन ए बी और बी सी, ठीक है। तो ये ना हम एरर बहुत करते हैं इसमें, टाइम स्पीड डिस्टेंस में। और ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है कि जो न्यूमरेटर आता है, दैट इज ऑलवेज द गैप बिटवीन द रनर्स, ठीक है, गॉट दिस। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, 3 पर्सन है ना। तो अभी इसको ना हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि एबीसी ट्रैक पे कब मिलेंगे, है ना। अगर सेम डायरेक्शन में रन करते हैं, तीनों पर्सन सेम डायरेक्शन में रन करके ट्रैक पे फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि जो 2 3 4 5 कुछ रनर्स हैं और आपको सबको एक साथ मीट कराना है, तो इनमें जो फास्टेस्ट रनर हो, है ना, उसको आप बेस मान लो। तो ए हमारा फास्टेस्ट रनर है ना, इसको हमने बेस मान लिया। अब क्या करेंगे इसको, आई विल कैलकुलेट टाइम ऑफ ए एंड बी मीट एंड टाइम ऑफ ए एंड सी मीट, है ना। तो अगर डी होता तो ए डी का निकालते, ई होता तो ए ई का निकालते। तो जो फास्टेस्ट रनर है आप उसको बेस मान लो और उससे बाकी सारे रनर्स को मीट करा दो, ठीक है। अब ट्रैक का लेंथ कितना होगा, 1200 मीटर, जो उनके बीच का गैप होगा, है ना। ए का स्पीड कितना है 150, बी का स्पीड कितना है 70, रनिंग इन सेम डायरेक्शन, ये कितना आ गया आपका 15 सेकेंड, ठीक है। तो ए और बी क्या होगा, हर 15 सेकेंड के गैप पे मिलते रहेंगे, 15 30 45 60 75 एंड सो ऑन, ठीक है। ए और सी क्या होगा, दिस इज 1200 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 130, है ना। ये कितना आ गया 20, दिस इज 60 सेकेंड। तो ए एन सी क्या होगा, हर 60 सेकेंड के गैप पे मिलते रहेंगे, 60 सेकेंड 120 सेकेंड, है ना, एंड सो ऑन। अब मुझे क्या करना है, एबीसी तीनों को एक साथ मीट कराना है। तो फिर से वही सेम चीज क्या करेंगे,
LCM किसका? 15 एंड 60 का। और 15 एंड 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60. 60 सेकेंड। तो So क्या basically होगा? they will meet ABC after 60 seconds, right, sir? आफ्टर 60 सेकेंड, यस। 60 like 60 120 180 240 हाँ, seconds. है ना? Okay. अब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था कि वो डायगोनल पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके जस्ट अपोजिट डायगोनल पे कब मिलेंगे, है ना? अब ये देखो यहाँ पे इस तरह के ना कई बार लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये वाला दिस, जब हमने पहला किया था कि दिस ए बी और सी तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट कर रहे हैं? 120 सेकेंड में। ये निकाला था हमने, है ना? ए बी सी तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट कर रहे हैं? 120 सेकेंड में। और अब हम क्या निकाल रहे हैं कि ए बी सी तीनों ट्रैक पे कब मीट कर रहे हैं? 60 सेकेंड में, है ना? तो अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 120 सेकेंड पे है, यहाँ पे 120 सेकेंड पे है, और ट्रैक पे कहीं 60 सेकेंड में है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? जस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट होगा, है ना? So why it will be the diagonal? ये देखो, अगर वो पूरा ट्रैक 120 सेकेंड में कवर कर रहे हैं तो हाफ ट्रैक पे कहाँ मिलेंगे? At the diagonal ट्रैक point. ट्रैक पे मिल रहे हैं ना कहीं पे, ये तो निकाल लिया ना हमने कि 60 सेकेंड में मिल रहे हैं, ट्रैक पे मिल रहे हैं, है ना? तो अगर ट्रैक पे 60 सेकेंड पे मिलते हैं, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 120 सेकेंड में आ जाते हैं रन करके, तो 60 सेकेंड में कहाँ होंगे? जस्ट हाफ पे, है ना? Got it. गॉट इट। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो देखो इसको और कैसे क्लियर करेंगे। ये हमने निकाल लिया ना कि ट्रैक पे कहाँ मिल रहे हैं? 60 सेकेंड्स में, है ना? ये तो आ गया ना समझ में, या नहीं? हाँ, ये तो आया ना समझ में कि ट्रैक पे 60 सेकेंड में कहीं मिल रहे हैं। अब मुझे ये प्रूव करना है कि वो 60 सेकेंड में जस्ट अपोजिट डायगनली पॉइंट पे ही मिल रहे हैं, राइट? ठीक है, Yes, yeah. तो क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए का स्पीड कितना है? 150। 60 सेकेंड के बाद मीट करता है, कितना हो गया? 9000। ठीक है। Yeah, yeah. डिस्टेंस ऑफ बी, ये कितना 70 से रन कर रहा है ना? 60 में कितना रन करेगा? For 4200। yeah, 42. ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सी, ये कितना 130 से रन कर रहा है 60 सेकेंड, कितना रन करेगा? 7800. 78। ठीक है। अभी देखो, ए रन कर रहा है 9000, बी रन कर रहा है 1200, सी रन कर रहा है 7800। बट जो हमारा ट्रैक है, ट्रैक की लेंथ कितनी है? ट्रैक की लेंथ तो 1200 मीटर ही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये इतना डिस्टेंस रन कर रहे हैं, तो इस ट्रैक के कुछ नंबर ऑफ राउंड्स रन कर रहे हैं। Yes, sir. 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, कुछ नंबर ऑफ राउंड्स रन कर रहे हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं कि इनके डिस्टेंस में से जो 1200 है, ट्रैक की लेंथ है, उसके मैक्सिमम मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9000 में से 1200 का मैक्सिमम मल्टीपल कितना आता है? कितना होगा 9000 में? 1200 का मैक्सिमम मल्टीपल कितना बनेगा? 9600. नहीं नहीं, इससे कम, इससे कम, 96, 9000 से कम, से 8400। 8400, है ना? तो 8400 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 600। ऐसे ही जरा बताओ, 4200 में से 3600। कितना? 3600, है ना? यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? 600। इसमें से बताओ कितना कर सकते हैं? 7200। 72. 7200। 72.
यहाँ पे कितना बचा 600। 600. तो अब ये देखो, अगर ये इतना डिस्टेंस रन कर रहे हैं, अगर ए 9000 कर रहा है, बी 4200 कर रहा है ना, और सी अगर 7800 कर रहा है, तो इतने तो ये कंप्लीट राउंड कर लेते हैं, 8400, 3600 एंड 7200। बाकी कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस और रन करते हैं, वो कितना कितना कर रहे हैं, 600, 600, 600। और अगर 600 करेंगे तो कहाँ जाके मीट करेंगे, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे मीट करेंगे। So answer is 60 second, right? आंसर is 60 सेकेंड। So we was right. Our answer was राय right, but our the हाँ, राय way was आंसर, wrong, right? हाँ, द मेथड वाज नॉट But करेक्ट, है ना, right, बट हाँ, yeah. लकीली आंसर पे जो न्यूमेरिक वैल्यू आ गया ना, वो सही आ गया था, Okay, sir. है ना। तो वो बाय लक न्यूमेरिक वैल्यू सही हो गया था, बट एक्चुअल में द अप्रोच इज नॉट करेक्ट। अब ये था थोड़ा सा लगे इन नंबर्स के साथ, इन वैल्यूज के साथ वो जो है मैच कर गया, बट अगर हम कुछ वैल्यूज को चेंज कर दें या कुछ फिगर्स को मॉडिफाई कर दें, तो हो सकता है कि फिर आपके आंसर मिसमैच कर दें, है ना। So basically, we don't have to assume, we have to find it through the mathematical way, and then we can say the यस यस answer. यस, देखो मैथ्स में तो एजम्पशंस पे तो काम नहीं चलेगा, है ना। जो एजम्पशन तो वो होता है कि जो हमें सबसे अच्छा लगता है, जो मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल होता है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं, बट एक्चुअली में वो कंफर्टेबल नहीं होगा ना, तो एजम्पशंस पे तो काम नहीं करेगा, राइट। यू हैव टू प्रूव मैथमेटिकली कि हाँ ये ऐसा ही है। So, हम्म sir, actually there is one doubt. It's हम्म like when we are considering that 1200 like meters का distance ले रहे थे, at that time हमने like we assumed कि they have a gap of 1200 like ABC का. नहीं नहीं, वो एज्यूम नहीं किया ना। ये वाला आप कह रहे हो, No, sir, जब, actually not this one. हाँ When the हाँ first question was there कि first time starting point पे कब meet कर रहे हैं, then we did the direct हाँ formula like LCM and HCF calculation. हाँ, So ये it's वाला like ना, ये जो फर्स्ट yes, वाला है। this one. हाँ, तो इसमें इसमें ना देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने क्या किया, टाइम ऑफ ए निकाला, और हमें क्या कैलकुलेट करना था कि जो पर्सन्स हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करें, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने के लिए जब ए पूरा एक राउंड करेगा तो 1200 ही रन करेगा, राइट। तो ये जो 1200 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द ट्रैक, है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्रैक। और ये जो सेकंड वाला 1200 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ ऑफ द ट्रैक व्हेन देयर इज a gap between A and B when they are meeting first time, है ना। Okay, sir, got अब it. अगर गॉट इट, अगर मैं इसको आपको बोलता हूँ कि ये सेकंड टाइम का मीट करेंगे, तो यहाँ पे 1200 वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट क्वेश्चन में 1200 कांस्टेंट रहेगा। आप चाहे 3 4 5 कितने ही पर्सन हो, वहाँ पे 1200 कांस्टेंट रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि सेकंड टाइम का मीट करेंगे, तो ये 1200 चेंज हो जाएगा, बिकॉज नाउ ए और बी के बीच का गैप इंक्रीज हो जाएगा, Sir, got it. है ना। गॉट इट। सो इसीलिए लाइक आई ऑलवेज से कि एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सो डैट के जो फिगर्स हैं, वैल्यूज हैं, वो कब कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें समझ में आना चाहिए, है ना। वैल्यू को पिक कर लेना तो बहुत इजी है कि अच्छा ठीक है चलो ये वैल्यू आ गया, बट वो वैल्यू एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो मेरे को समझ में आना चाहिए, देन ओनली मेरे जो लॉजिक है वो वर्क करेंगे और हम क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। Sir, I had the similar doubt, थोड़ा सा अभी भी हम्म unclear है। जैसे आपने हम्म एग्जांपल दिया था कि ए बी को कब कैच करेगा, 100 मीटर का उसमें गैप है, ए इज एट हम्म हम्म 20 एंड बी इज एट हम्म 10, राइट। सो हम्म ये 10 सेकेंड्स का वो कवर करेगा, एंड द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी is 100 here, right? We हम्म are assuming in that context. तो उसी सेम हम्म context में जो हम ऊपर भी जब हम टाइम निकाल रहे हैं ए एंड बी का इन द सर्कुलर रेफरेंस, तब हम 1200 एज्यूम कर रहे हैं कि ए एंड बी का डिफरेंस उसमें ये है, बिकॉज ए इज द फास्टेस्ट एंड बी इज लोअर देन दैट, तो ये हम एज्यूम हाँ कर रहे हैं, राइट। हाँ,
नहीं, बट दिस इज नॉट एजम्पशन, दिस इज एक्चुअल। यहाँ पे देखो जो मैंने आपको ये दिखाया था, आई जस्ट अगेन हाईलाइट दिस। पहले आप देखो ये जो ग्रीन वाला जो है, पहले यहाँ से ए को रन कराना स्टार्ट किया। ए ये पूरा ट्रैक रन करता है ना, ये पूरा ट्रैक रन करता है, यहाँ तक रन करके ये पूरा यहाँ आ जाता है। तो ए ने कितना रन कर लिया अभी तक? 1200 मीटर। 1200 मीटर रन कर लिया। इन द मीन टाइम जब ए ने ये 1200 मीटर रन कर लिया, तो बी तो बहुत स्लो है, उसके हाफ से भी कम है, तो बी धीरे धीरे भाग रहा है, और बी ने ये वाला पार्ट इतना रन कर लिया। ठीक है, बी यहाँ तक पहुंच गया कहीं पे, और ए तो 1200 कर ही चुका है पहले। अब ए ने क्या किया कि ए को बी को कैच करना है। तो ए ने जब पूरा एक 1200 रन कर लिया, तो ए ने दूसरा राउंड स्टार्ट किया, सेकेंड राउंड के लिए वो निकल पड़ा। और सेकेंड राउंड पे जब वो निकल पड़ा, तो उसने ये वाला जो पार्ट है इतना रन किया, और यहाँ आके उसने बी को कैच कर लिया। तो ये जो येलो और ब्लू कलर का जो डिस्टेंस है ए और बी का, ये तो बराबर ही हो गया, इसमें तो गैप नहीं है, दोनों ने इक्वल राइट। डिस्टेंस रन किया। गैप कहाँ पे आ रहा है? जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन जो है ऑलरेडी ना। कवर कर और लिया ए ने। वो हाँ, जो ऑलरेडी कवर कर लिया, और वो कवर कितना है? ये है 1200, ओके, इन द है ना। सेम मैनर जब वो 10 सेकंड्स का गैप था तो ऑलरेडी ए ने वो डबल स्पीड में कवर कर लिया, वो कहाँ पे उसको कर कैच कर रहा है वो हमने कैलकुलेट किया, राइट। राइट राइट। अब अगर मैं ओके। इसको ऐसे स्ट्रेच कर दूं, है ना, ऐसे स्ट्रेच कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि ए और बी के बीच में गैप कितना है? 1200 मीटर है। 1200 का। ए 150 से रन करता है, बी 70 से रन करता है, तो कितने देर में वो कैच करेगा? इसमें हम डिडक्ट कर है ना। देंगे बस, बिकॉज इट्स अ वो स्ट्रेट हाँ, लाइन दैट। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें वो हर एक सेकंड में 80 मीटर रन करता है। तो फर्स्ट राइट। सेकंड में 80 मीटर कम कर देगा, नेक्स्ट सेकंड में 160 कम कर देगा, और धीरे धीरे ऐसे करके 15 सेकंड में पूरा 1200 कंप्लीट कर देगा और कैच कर देगा। ओके, नाउ इट्स सॉर्टेड। ठीक है, यस। ठीक है। सो थैंक यू। just start solving, thank you, just start solving the questions, right? Solve examples, practice exercise, online test paper, right? जितना आप ज्यादा एक्सपोजर लोगे क्वेश्चंस का, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जो है कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी आएगी, और उतना ही फिगर्स के साथ आप प्ले कर सकते हो, गेम कर सकते हो, है ना। और जितना आप नंबर्स को मैनिपुलेट करोगे, उतना ही एग्जाम इजी रहेगा सॉल्व करना, राइट। So with this, I am just winding up the session for today, right? Take care.